Hello students, मैं BL Sharma, Maths sir. Today we are discussing statistics continue. This is part 2. We already have done 10 questions in part 1. Please, if you have not watched, please watch it. And now without wasting time, we have to begin with question number 11. And this question number 11 is, yes, consider the following frequency distribution. The class interval is given 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 with their frequencies. And we have to find out the modal class. Student here, modal class means the class having the highest frequency, the maximum frequency. So here maximum frequency is 30 and its class is 30 to 40, means class interval 30 to 40 is having means maximum frequency. That is why the modal class is equal to 30 to 40 आंसर उस क्लास इंटरवल की जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको ही मॉडल क्लास हम कहते हैं एंड मॉडल क्लास इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मोड ऑफ द गिवन डेटा. So this is the answer of this question number 11. And now we come to the next question. Question number 12. Lifetime of electric bulbs are given in the following frequency distribution. And the question is, find the class mark of the modal class. Again, here the highest frequency is 21 out of 5, 14, 12 and 10. हाईएस्ट इज 21, सबसे ज्यादा 21 है और इसका जो क्लास इंटरवल है दैट इज 350 to 5 and 400. That is why the modal class of this in the given question is 350 to 400 answer. And I think it is clear to you, वो क्लास इंटरवल जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको ही हम मॉडल क्लास कहते हैं. सो हियर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इज 21 एंड इट्स क्लास इंटरवल इज 350 to 40, 400. सो द मॉडल क्लास इज 350 to 400 and the question is we have to find out the class mark. So class mark means mid value of the class mark. So class mark is lower limit plus upper limit divided by 2. So 350 plus 450 divided by 2 on division. At the same, we can find out that will be, we can write here, this is 375 answer. So modal class is 350 to 400 and class mark of the modal class is 375 answer. Now we come to the next question. And this question is, yes, the frequency of the class succeeding the modal class in the following frequency distribution is. देखिएगा यहाँ पे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है. In this question, the highest frequency is 16. That is why this is modal class is 20 to 25.
और इससे सक्सीडिंग मीन्स उसके बाद आने वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 12. सक्सीडिंग का मतलब है द फ्रीक्वेंसी विच कम्स जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, दैट इज 12 answer. So we can write here the means the frequency of the class succeeding the model class in the given frequency distribution is 12 answer. That is the answer of this question. That is also required when we calculate the mode of the given data. And now we come to the next question, question number 14. Yes, see, this question says that the modal class of data given below is 10 to 15. ये पहले ही पता चल गया हमको कि जो मॉडल क्लास है वो 10 to 15 है. इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. और यहाँ पे पहले ही द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट 0 to 5 क्लास इज गिवन 8. इट मींस ये ऐप की वैल्यू 8 से कम नहीं होनी चाहिए. The value of the frequency of the modal class should be greater than this 8. So greater than this 8 means it should be either a 9 or greater than 9. So frequency should be either 9 or greater than 9. So B is the correct option here. यहाँ पे स्टूडेंट्स मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए. इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द मॉडल क्लास इज 10 to 15. 10 से 15 मॉडल क्लास है और इसी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ है. 8 यहाँ पहले ही आ चुका है. इसका मतलब है जो वैल्यू ऑफ एफ होगी वो होगी 8 से ज्यादा, और 8 से ज्यादा का मतलब आइदर 9 और मोर देन 9. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. 9. Now we come to the question number 15. In this question, the question is, what is the mode of the given frequency distribution? Here, student, we check here. The highest frequency is 32 and its corresponding class interval is 30 to 40. So first of all, we can say that the modal class is 30 to 40 and the frequency of the modal class, that is f1. f1 is the frequency of the modal class, that is 32. So सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको ही फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कहते हैं, एंड दिस इज गिवन 32. F0 is the frequency preceding the modal class. मॉडल क्लास के जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हमने इस फॉर्मूला में लिखा है F0 and that is 12. So we can write here that is 12. And what is F2? F2 is the frequency succeeding the modal class. मॉडल क्लास के जस्ट आफ्टर आने वाली है, उसको हम कहते हैं F2. So you can write F1 is 32, F0 is 12, and F2 is 20. So here we can write the value of F2 is 20. Okay. And what is L? L is the lower limit of the modal class. Here the modal class is 30 to 40. Its lower limit is 30. So what is the value of L? That is 30. So we can write here 30. And what is H? What is the class size? You can take the difference of the upper limit or lower limit of any class. The difference of the first sum is lower limit and upper limit of the first class. 0, 10 minus 0. कितना difference है इसमें? 10 का. What is difference of 10 and 20? 10 का. So what is H? What is the class size? That is 10. So now you can put in the formula. Please learn this formula. This formula is very, very important. The mode of the given data is given by L bracket F1 minus F0 divided by twice of F1 minus F0 minus F2 into H. So please do it.
Yes. So we can write here in the formula, we can write 30 because lower limit L is 30 plus bracket F1 is 32 minus F2, F0 is 12 divided by twice of F1 is twice of 32 minus F0 is 12 minus F2 is 20 into H. यस, ये ब्रैकेट में होना चाहिए, साइन यहाँ पे एडिशन होगा। मॉडल क्लास का मतलब ये होता है कि जो भी आपका मोड की वैल्यू आएगी और इट विल लाई बिटवीन 30 एंड 40 बिकॉज द मॉडल क्लास इज 30 to 40. इट कैन नॉट बी लेस देन 30, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 40। 30 से कम नहीं आ सकती, 40 से ज्यादा नहीं आ सकती, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो नाउ वी कैन रिप्लेस द वैल्यू, वी कैन कैलकुलेट इट। सो प्लीज कैलकुलेट इट। So that is 30 plus means I can calculate it 25 by 4, that is 36.25 answer. Please calculate it carefully. This is simply multiplication division. I have done it directly, but you have to calculate means separately. You can use rough copy for that, rough space for that, but the answer will be 36.25. So first of all, what you have to do, you have to find out the maximum frequency, that is 32. 32 will be F1. Then the frequency preceding F1, F1 के जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं F0, and the frequency succeeding the modal class 32 के जस्ट बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी, that is 30-20. ये सारे इक्वेशंस में होगा जिसमें हमें मोड फाइंड आउट करना होगा। And for the modal class, the class which is the class which correspond the class of the means with the maximum frequency, that is modal class. So 30 to 40 is the modal class here, और modal class की lower limit को यहाँ पे L small l से represent किया गया है। You have to learn this formula, mod is equal to L bracket F1 minus F0 divided by twice of F1 minus F0 minus F2 bracket close into H. So putting all these values in this formula, we get the answer, that is 36.25. I think this question is clear to you. You please pause here for some minutes, check this question again and again, how we did this question, because next question is also to find out the mode of the given data. So now we can go for the next question. Yes. See here, in this question, the question is consider the following table. Yes, the class interval is given and the frequency is given, and the question is what is the mode of the above data. First of all, we have to consider here the highest frequency, that is 25. So you can write here F1. F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को ही the highest frequency, that is 25. Its preceding frequency, that is 16. So you write here F0 is equal to 16, and F2, that is the frequency succeeding the modal class, that is F2, and this is F1. So F2 is equal to 19 here. Yes, आपके समझ में आ रहा होगा। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 लिखिएगा, उसे जस्ट पहले आने वाले को 16 लिखिए, F0 लिखिएगा, उसके जस्ट बाद में आने वाले को F2 लिखिएगा। ओके, एंड नाउ since the highest frequency is 25, so we can write here the modal class. Modal class is the class means which is the corresponding to the highest frequency, that is
that is 22 to 26. So modal class, right here, that is 22 to 26. And what is L? L is the lower limit of the modal class, that is 22. And what is H? H is the class size. What is the class size here, student? Upper limit minus lower limit divided by 2. That is what? 14. What is the difference of 10 and 14? That is 4. So what is the class size here? Class size here is 4. So we have here L, we have here means F1, F0, F1, F0, F2 and H. ये सारे के सारे वेरिएबल F1, F0, F2, L और H हमारे पास है. अब हमें क्या कर देना है, इसको सावधानी से इनकी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में हमें पुट कर देना है. सो हियर मोड इज इक्वल टू, that is L is 22 plus F1 is 25, F0 is 16 divided by 2 into F1 25, F0 16, F2 19 and multiply by H. H is 4. Student, please you try to simplify with me, because what happens when we check your copies, means examiner check your copies, you do mistake in calculation, in addition, in subtraction. So please do with me. This is 22 plus, yes, plus 9, 25 minus 16, that is 9 upon 25 to the 15 minus 16 minus 19. That is, I think, 15 into 4. You can write 22 plus 36 by 15 on division. We can get 24.4 answer. So the mode of the given data, that is mode, is 24.4, and this is the answer of this question. See how did we do this question? हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, आप इसको देखिएगा. पहले हमने सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी, वो 25 है, वो हमने F1 लिखा. जस्ट पहले F1 के जो है, सॉरी, दैट इज this is F0, that is F0, F1 and F2. राइट, उसके जस्ट पहले F0 और F1 के जस्ट बाद F2 है. तीन ये F0, F1, F2 तो कंटिन्यूअस है. और H हमें यहाँ से पता चली जाता है द क्लास साइज का. और जस्ट हमें मॉडल क्लास जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग क्लास होती है, दैट इज मॉडल क्लास. या 22 to 26 इज द मॉडल क्लास. और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको ही यहाँ पे L से रिप्रेजेंट किया है. सो दैट इज 22. You put the values in the given formula and get the answer. Please learn this formula many times, 2 times, 3 times, 4 times, 10 times. Because if you don't memorize, you don't learn the formula, we cannot put the values and we cannot get the correct answer. I think this is the correct answer of this question. Now we come to the next question. And the next question is, if the median of the data 6, 7, x minus 2, x 17, 20 written in ascending order is 16, then x is equal to, student, this is the question of 9th standard. We know that here number of observations are, कितने हैं इनको count करिए. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are total means 6 observations. So we can write n is equal to 6, means that is number of observation, that is 6, and we can say this is even. So for the A1,
median is given by n by 2 plus n by 2 plus 1 divided by 2. Median is already given, that is 16. In place of n, if we put 6, so means 6 by 2 observation plus 6 by 2 plus 1th observation divided by 2. So if you consider here or count here, that is median is 16 already given. That is why we are putting here in place of median, that is 16. Is 16 पहले से दे रखा है, that is why I have written here 16. So we write here 16. That is third observation plus 6 by 2 third plus 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2. ये 3 plus 4 7 by 2 नहीं कर देना, ये नंबर की ऑब्जर्व कौन से नंबर की ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ पे. सो हियर यू विल फाइंड दैट 16 द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज means x minus 2 and second observation is x divided by 2. So you simply put the value yourself. You can find out that is x minus 2 plus x by 2. On simplification, we have here the value of x is equal to 17. Answer. You are in 10th class. I think you can consider it. You can solve it. The value of x is equal to 17. This is the answer of this question, student. यहाँ पे x की वैल्यू 17 होगी और ये क्वेश्चंस 9th क्लास से लिया गया है स्टैटिस्टिक्स से. Right? And now we come to the next question. That is, find the class mark of the modal class in the following. I think we already have done this. We can do it again. Here, the modal class means the class having the maximum frequency, that is 28. Its corresponding class is 60 to 70. So the modal class is equal to 60 to 70, and the class mark of the modal class is 60 plus 70 by 2, that is 130 by 2, that is 65. Answer. So this is the answer of question number 18 here. Right? And now we come to the next question. This question is of median, how to determine the median. For this, we have to take, we have to take here, the question is, I think it is not correct here. That is 40 to 60, and that is 20 to 40. 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. So I am writing here, इसी कैसे टेबल बनाते हैं हम. I am writing class interval here and frequency here, that is 20 to 40, that is 10, 40 to 60, that is 12, 60 to 80, that is 20, 80 to 100, that is 22. ध्यान से देखिएगा, ये मीन नहीं है, ये मोड नहीं है, ये मीडियन. मीडियन का मतलब है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन. उसके लिए हमें हमेशा ही क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है, CF. CF स्टैंड फॉर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो उसमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट यू राइट 10, ये एज इट इज रखना है, फिर 10 plus 12, that is 22, 22 plus 20, that is 42,
42 plus 22, that is what? 64. You please try it, do it yourself, try to do it yourself. That is 64. Okay. Then if you add, okay, क्या आपके समझ में आया? देखिए क्या किया हमने, ये 10 फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखा, उसके अंदर फिर इसको 10 में 12 ऐड किया, 22 में 20 ऐड किया, 42 में फिर 22 ऐड किया, दैट इज 64. अब जब इनका सबका ऐड लोगे, F1 का 10 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 22, तो जो सारी फ्रीक्वेंसी का सम आएगा दैट इज 22. और जब ये लास्ट वाला जो सम करने के बाद फ्रीक्वेंसी आता है, दिस इज सेड टू बी एल, दैट इज सॉरी, दिस विल बी not 22, that will be, I think that will be 64. This will be 64. सारी फ्रीक्वेंसी का जो सम आता है वही आपको ऐड करने के बाद ये लास्ट सम आएगा. सो n is equal to 64. We know the formula for the median. How to determine that is very, very essential here. Here median is equal to L plus n by 2 minus CF into F into H. ध्यान देने की बात यह है कि इसमें हम बहुत बड़ी गलती ये तब कर जाते हैं जब हमें मींस मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होती है. ये मीडियन का क्लिक है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में मीडियन नहीं फाइंड आउट करनी, हमें केवल यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है यहाँ पे. तो देखिए क्या करें. फॉर द मीडियन क्लास यू पुट n by 2 means 64 by 2, that is 32. ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो देखिए अप टू 10 आपका ये रहा, अप टू 22 ये रहा, और 23 से लेके 42 तक ये रहा. तो ये 32 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा, अगर हम गौर से देखेंगे, इट विल लाई हियर इन दिस. और इसका जो कोरस्पॉन्डिंग क्लास है वो कौन सी है? 60 to 80. फिर से देखेगा, अप टू अगर ये n by 2 10 होता तो 10 तक ये होता, 11 to 22 ये वाला, और 23 से लेके 42 ये वाला. ये हमारे हमको चाहिए यहाँ पे 32. सो दैट इज 60 to 80. सो वी कैन राइट हियर that the median class is that is 60 to 80 and this is the answer. यहाँ स्टूडेंट हमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला उसके लिए यूज करते. नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भी मीडियन का कोई क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज कर रहे होंगे. एंड this is very, very important question for you. Many times this relationship has come in the examination. This question you will see here. What is the relation here? What is relation? What is empirical formula? It gives a relationship between mean, mode and median. So we can say mode is equal to, yes. So thank you student, यही तक आज रहेगा. Okay, thank you very much.